dear student. Welcome to Multi Smart class. Today we are going to study the first chapter of your Flamingo book, The Last Lesson by Alphonse Daudet. The story is about linguistic chauvinism. So let's see about our author. Alphonse Daudet was a French novelist and a short story writer. The Last Lesson is set in the days of the फ्रैंको-प्रूशियन वॉर. तो ये जो स्टोरी लिखी गई है वो फ्रैंको-प्रूशियन वॉर के बारे में है जो 1870 टू 1871 के बीच में हुई, जिसमें फ्रांस जो था वो डिफीट हो चुका है प्रूशिया से, और एल्सिक एंड लॉरेन जो कि दो प्रोविंसेस हैं हमारे फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट, वो अब अंडर कंट्रोल हो गए हैं प्रूशियन के, जिसमें हमारा स्टोरी में दिखाया गया है कि हाउ दे आर इम्पोजिंग देयर जर्मन लैंग्वेज on the district of French Alsace and Lorraine. So let's see who are the main characters. There are two main protagonists. M. Hamel, a French language teacher who served his 40 years in Alsace school. Another is Branch, a school-going boy who always loves to bunk the classes. Now let's see the chapter. I started for school very late that morning and was in a great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. For a moment I thought running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the swamp mill, the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. So इस पैराग्राफ में आप देख सकते हो कि हमारा जो फ्रेंच है वो काफ़ी लेट उठा है उस मॉर्निंग, और वो काफ़ी डरा हुआ है क्योंकि एम हैमल उससे पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, पूछेंगे स्कूल में, जिससे उसने कुछ भी तैयार नहीं किया था, और वो दौड़ता हुआ स्कूल जाने की ओर निकल पड़ता है. फिर वो सोचता है उसे ब्राइट सनलाइट बर्ड्स काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन वो अपने आप को रोकता है और वो स्कूल की ओर निकल पड़ता है. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself, without stopping, what can be the matter now? So, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो फ्रेंच है वो अपने आप को रोक लेता है काफ़ी ज़्यादा, और स्कूल की तरफ वो चल पड़ता है. जब वो स्कूल जाता है तो काफ़ी क्राउड होती है बुलेटिन बोर्ड. बुलेटिन बोर्ड का मतलब यहाँ होता है नोटिस बोर्ड, जहाँ एल्सिक में पिछले 2 सालों से 1870 टू 1871 से सिर्फ बैड न्यूज़ ही आ रहे थे, जैसे कि लॉस्ट बैटल, ड्राफ्ट द ऑर्डर्स कमांडिंग ऑफिसर्स के न्यूज़. तो अब हमारे फ्रेंच ने सोचा कि अब तो नया कुछ है नहीं, ऑल द बैड न्यूज़ आर देयर, सो इट्स बेटर टू मूव टू द स्कूल. तो वो फिर वो अपना स्कूल की तरफ निकल पड़ता है. देन एज आई हर्रिड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैक स्मिथ वॉचर who was there with his apparatus reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, Bob. You will get to your school in a plenty of time." So यहाँ पे आप देख सकते हो जब हमारा फ्रेंच जो है वो रुकता नहीं है, वो अपने स्कूल की तरफ मूव करता है, तो रास्ते में उसे नोटिस बोर्ड के पास ब्लैक स्मिथ दिखते हैं, वॉचमैन दिखते हैं, जो कि अपने अपने वो अप्रेंटिसेस के साथ खड़े रहते हैं. वो बोलते भी हैं, उस पर कमेंट करते हैं कि डोंट गो सो फास्ट बाब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन अ प्लेंटी ऑफ टाइम. तुम जल्दी स्कूल पहुंच जाओगे. आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी and reached M. Hamel little garden out of olive wreath. Usually when school began there was a great bustle which could be heard out in the street. Obviously जब भी स्कूल होता है तो काफ़ी ज़्यादा वो noisy होता है, chaotic होता है. The opening of closing of desk, lesson repeated in unison, very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler tapping or rapping on the table. But now it was all so still.
I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. हमारे फ्रेंच ने सोचा था कि इस शोरगुल में वो चुपचाप जाकर अपने बेंच पर बैठ जाएगा, लेकिन अपोजिटली कॉन्ट्रास्टिव सारा एटमॉस्फेयर काफ़ी शांत है, काफ़ी स्टिल है, जैसे कि संडे मॉर्निंग हो. Through the window, I saw my classmates already in their places, and M. Hamill walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. Obviously, काफ़ी वो late है तो blush करेगा ही, और उसने participles पे कोई rules तैयार भी नहीं किए तो काफ़ी डरा हुआ भी है. But nothing happened. M. Hamill saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little French. We were beginning without you." तो जैसा आप देख सकते हो टीचर का मूड काफ़ी डिप्रेस्ड है. वो काफ़ी हैवी टोन में बोलते हैं कि हमने क्लासेस तुम्हारे बिना ही शुरू कर दी और उसे कोई डांट भी नहीं पड़ती. I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had go a little over my fright, did I see then that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize day. तो क्या अनयूजुअल देखा हमारे फ्रेंच को कि उसके जो टीचर हैं एम हैमल, वो आज नए अटायर में है, न्यू ड्रेस में है, जो यूजुअली वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के डेज है इंस्पेक्शंस पे पहनते हैं. उन्होंने क्या पहन रखा है? उन्होंने खूबसूरत सा ग्रीन कोट पहन रखा है और एक शर्ट है, फ्रिल्ड है, और एक ब्लैक सिल्क कैप पहना है जिस पे काफ़ी ज़्यादा एम्ब्रॉयडर्ड की हुई है. The whole school seemed so strange and solemn, but the thing that surprised me the most was to see on the back benches that were always empty. इससे भी ज़्यादा सरप्राइजिंग हमारे फ्रेंच के लिए ये था कि जो लास्ट बेंचेस हमेशा खाली हुआ करते थे, आज वहाँ पे कौन बैठे हैं? Senior people. Who are they? Let's see. The village people sitting quietly like ourselves. Who are they? Old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several other beside. Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer. Old primer होता है old alphabetic books. Thumped at the edge, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. So सबसे ज़्यादा अनयूजुअल हमारे फ्रेंच के लिए ये था कि जब वो स्कूल पहुंचा तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा शांति थी, कोई हस्टल बस्टल नहीं थे, कोई नॉइज़ नहीं थी. जब वो क्लास के अंदर आता है तो टीचर उसे नए ड्रेस में दिखते हैं जो कि यूजुअली वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशंस में पहनते हैं. तीसरी चीज़ उसे बहुत अनयूजुअल लगी कि जो लास्ट बेंचेस काफ़ी खाली रहते थे हमेशा, वहाँ पे सीनियर पीपल जैसे ओल्ड हासर, मेयर, फॉर्मर पोस्टमास्टर, सारे लोग बैठे हुए विथ फ्रेंच लैंग्वेज की अल्फ़ाबेटिक बुक्स लेकर, जो कि काफ़ी ज़्यादा दुखी नज़र आ रहे हैं. While I was wondering about it all, M. Hamill mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." सो डियर स्टूडेंट, आप इमेजिन कर सकते हो ये एम हैमिल के लिए कितना टफ टाइम होगा जब वो ये अनाउंस कर रहे होते हैं कि बर्लिन से ये ऑर्डर आया है कि कल से एल्सिक और लॉरेन के स्कूलों में जर्मन की पढ़ाई होगी. सो व्हाट द प्रूशियंस आर डूइंग? प्रूशियंस आर इम्पोजिंग देयर लैंग्वेज ऑन द फ्रेंच पीपल. They are not only captured their land, but they wanted to capture their language and their soul also. For any country, mother tongue is the identity and that is the power. But here they are going to lose it. So that's why the teacher was very sad. What a thunderclap these words were to me. Thunderclap का मतलब होता है बिजली सी कौंधानी. तो यहाँ फ्रेंच के कानों में ये थंडर क्लैप की तरह ये आवाज़ जाती है कि कल से उसे अपनी लैंग्वेज नहीं पढ़नी है. Oh, the wretches!
That was that they had put up at the town hall. अब समझ में आया हमारे फ्रेंच को कि वहाँ पे बुलेटिन नोटिस बोर्ड पर लोगों की भीड़ क्यों लगी हुई थी. And why they toned on him. Why Hosur was there, old former mayor, postmaster, senior people. Why his teacher was in the new attire. So now he is getting all that and link it with the news. My last French lesson. Why I hardly knew how to write. I should never learn any more. I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking bird's egg or going sliding on the Sar. Sar is called the river here in Alsek. My books that had seemed much a nuisance a while ago, so heavy to carry my grammar and my history of the saints, were old friends now. तो हमारे फ्रेंच के कानों में बिजली सी कौन जाती है और वो काफ़ी दुखी हो जाता है कि अभी अभी तो उसके अपने किताबों से दोस्ती हुई थी. वो किताबें जो उसे डिस्टर्ब करते थे, न्यूजियंस क्रिएट करते थे, और वो कहाँ बिजी रहता था. वो बर्ड्स के एग्स को ढूंढने में और नदी सार रिवर के पास जाकर स्लाइड करने में. तो उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती थी. अब उसे रियलाइज़ हो रहा है कि उसने अपने सारे टाइम उसने वेस्ट कर दिए हैं और अब ये सारी चीज़ें अब उसके लिए एक पास्ट मेमोरी बन के रह जाएगी. That I could give up. And M. Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again. और वो अपने टीचर के लिए भी काफ़ी बुरा फील कर रहा है कि कल से वो अपने टीचर को देख नहीं सकता है. Poor man, it was in his honor of his last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of a faithful service and of showing their respect for the country that was the देयर इज़ नो मोर. सो यहाँ पे सारे लोग अब फ्रेंच को समझ में आ जाता है कि क्यों विलेज के पीपल सारे लोग आए हुए हैं, क्योंकि दे वांटेड टू गिव द ट्रिब्यूट एंड रिस्पेक्ट टू देयर लैंग्वेज फ्रेंच. While I was thinking all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to understand that dreadful rule for the participles all through, very loud and clear and without one mistake. But I got mixed up on the first word and stood there, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. I heard M. Hamel say to me, I won't scold you, little French. जैसा कि हमारे फ्रेंच ने सोचा कि जब उसका नेम कॉल्ड होता है तो वो बिल्कुल कोई मिस्टेक नहीं करेगा, बिल्कुल क्लियर लाउड वॉइस में बोलेगा. लेकिन जब वो स्टार्ट करता है तो सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं और वो काफ़ी डर जाता है. लेकिन उसके टीचर ने उसे बोला कि वो उसे बिल्कुल भी नहीं डांटेंगे, क्योंकि every day we have said to ourselves, I have a plenty of time, I will learn it tomorrow. अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, आज नहीं तो कल कर लेंगे. So we are keep postponing the things here. And now you see where we have come out. That's the great trouble with Alsek. She puts off learning things tomorrow. Alsek ने क्या किया? यहाँ she represented to the Alsek. Alsek के लोगों ने क्या किया कि keep their postponing the things for tomorrow. And now there will be no time. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it? You pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language. But you are not the worst, poor little French. We all have a great deal to ever approach ourselves with it. So यहाँ पे हमारे टीचर ने बोला कि हम लोगों को फ्रेंच मैन कहलाने का क्या हक है जब हम फ्रेंच लैंग्वेज भी नहीं बोल पा रहे, ना ही हम उसे लिख पाते हैं. So where we have the love for our language. What a poor thing this is. Poor little French. This is the reapproach we have to do as a Frenchman. We have all great deal to reapproach ourselves with. Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at a mills so as to have a little more money. And I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your schools? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एम हेमिल है वो पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं कि वो अपने बच्चों को
मिल्स में, फार्म्स में ज़्यादा पैसे कमाने के लिए भेज देते हैं इंस्टेड कि वो स्कूल भेजें। और वो अपने आप को भी ब्लेम करते हैं कि जब वो फ़िशिंग पे जाते हैं तो बच्चों को छुट्टियां दे करते हैं और स्कूल्स की जगह पे वो फ्लावर्स को वाटर करने के लिए भी भेज देते हैं। Then, for one thing to another, M. Hamel went on to talk on the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. तो यहाँ पे एम हैमेल अपने फ्रेंच लैंग्वेज, जो कि काफ़ी डिवोटेड हैं, अपने लैंग्वेज को बहुत लव करते हैं, पैट्रियोटिज्म की वो भावना नज़र आ रही है यहाँ पे। तो ही वो कहते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है, सबसे ज़्यादा क्लियर और लॉजिकल है। हमें अपने लैंग्वेज की रक्षा करनी चाहिए एंड वी नेवर फॉरगेट इट, बिकॉज व्हेन पीपल आर enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. तो जब हम enslaved होंगे तो लैंग्वेज ही हमारी की होगी इस prison से बाहर आने की. So we must guard our language. Then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy, so easy. I think too that I had never listened so carefully, that he had never explained everything with so much patience. So आज फ्रेंच को काफ़ी ज़्यादा अपने ग्रामर के लेसन समझ में आते हैं. उसे लगता है कि शायद आज से पहले मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया, या फिर हमारे टीचर ने इतना पेशेंट होकर कभी पढ़ाया ही नहीं. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew all into our heads at one stroke. After the grammar, we had a lesson in writing. That day, M. Hamel had a new copies for us, written in a beautiful round hand, France Alsec, France Alsec. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desk. You ought to have seen how everyone set to work, and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. तो एम हैमेल ने उस दिन क्या लाया था? एम हैमेल ने ग्रामर के बाद राइटिंग सेक्शन स्टार्ट की. उसके लिए उन्होंने न्यू कॉपीज़ लाई थी, जिस कॉपीज़ भी राउंड लेटर्स में लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेक, जो कि एक ब्यूटीफुल फ्लैग की तरह क्लासरूम में नज़र आ रहा था. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग उस दिन ये थी कि पूरा क्लास जो था वो काफ़ी शांत था, और वो जो पेपर्स पे जो बच्चे पेन से लिख रहे थे सिर्फ स्क्रैचिंग साउंड्स आ रही थी. सो दे आर टोटली डिवोटेड टू देयर लैंग्वेज एंड देयर लास्ट क्लास दैट रिप्रेजेंटेड हियर. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest one, who walked right on tracing their fishhooks as if that was French too. On the roof the peasants cooked very low, and I thought to myself, will they make them sing in German? Even the peasants? Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरे क्लास में डेडली साइलेंस है. ओनली द स्क्रिबलिंग साउंड, स्क्रैचिंग साउंड ऑफ द पेन्स आर कमिंग आउट. और इवन जो बीटल्स क्लास में फ्लाई करते हैं तो वहाँ पे भी किसी भी बच्चे ने अटेंशन नहीं दिया, इवन कि सबसे छोटा बच्चा भी नहीं. दे ऑल आर ट्रूली डिवोटेड टुवर्ड्स द लैंग्वेज. इवन हमारे फ्रेंच ने तो पीजेंट्स पे भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट किया कि क्या पीजेंट्स को भी वो जर्मन लैंग्वेज में सिंग करवा सकेंगे, बिकॉज़ यहाँ पे आपको सिर्फ लैंड्स इंस्लेवमेंट नहीं है, यहाँ पर आपको लैंग्वेज इंस्लेवमेंट है, बिकॉज दे आर इम्पोजिंग देयर जर्मन लैंग्वेज ऑन देम. सो व्हेनेवर फ्रेंच जब टीचर्स को देखता है तो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है, सिटिंग, बिकॉज उसके टीचर है एम हैमेल, सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. Fancy, for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. तो यहाँ पे एम हैमेल अपने मोशनलेस होकर चेयर पे बैठते हैं, और वो हर चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, स्कूल की हर रूम्स को, प्लेसेस को, गार्डन्स को, क्योंकि वो सारी चीज़ें जिनके लिए उन्होंने अपनी पूरी 40 ईयर्स डिवोट की थी वो कल उन्हें छोड़कर जानी होंगी. सो ही वॉन्ट टू कैप्चर एवरीथिंग इन हिज माइंड बिफोर लीविंग एल्सेक.
Just like that, only the desk and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hope vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. How it must have broken his heart to leave it all! Poor man! To hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्रेंच अपने टीचर के लिए काफ़ी बुरा फील कर रहा होता है कि टीचर ने उसके जो वॉलनट ट्रीज़ लगाए थे, जो अब बड़े हो चुके हैं, होप वाइन्स जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़े होके प्लांटेड हो चुके हैं, वो सारी चीज़ों को उसे छोड़कर कल ये कंट्री छोड़कर चले जाना है। और ये सारी चीज़ें उसके टीचर के लिए कितनी हर्ट ब्रोकन होंगी, वो ये इमेजिन करके ही वो अपने टीचर को कहता है कि पुअर मैन। इवन जो उसकी ऊपर में सिस्टर है एम हैमल की, वो अपने सारे सामान पैक कर रहे हैं बिकॉज दे हैव टू लीव द कंट्री नेक्स्ट डे. But he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba, bee, bo, boo. Down there at the back of the room, old Husser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotions, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. See what the condition is here. Everybody is crying at the last lesson, and here the condition is that they cannot utter a spell, a word. How well I remember it at that last lesson. All at once the church clock struck 12. Then the angelus. At the same moment, the trumpet of the Prussians returning from drill sounded under our windows. तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो चर्च की क्लॉक है वो 12 पे सुई बज चुकी है. उधर प्रूशियन ड्रिल से लौटकर सोल्जर्स भी आ चुके हैं. ये सारे इंडिकेशन है कि दे हैव टू लीव द क्लास नाउ. एम हैमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर. I never saw him so tall today. Tall in the sense कि वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं और sad हैं. My friend, said he. I. But something choked him. He could not go on. हमारे एम हैमल काफ़ी ज़्यादा depressed हैं with a heavy heart. He didn't have any word to just spell any word. So he just take the piece of chalk and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, "We are la France." That means long live France. Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word, he made a gesture to us with his hand. School is dismissed. You may go. So आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो स्टोरी एंड होती है जिसमें हमारे फ्रेंच टीचर एम हैमल जो कि अपने लास्ट क्लास में अपने लास्ट लेसन में अपने लैंग्वेज के प्रति काफ़ी डिवोटेड होते हैं. और दिस इज़ द रियलिटी एंड द सेंट्रल थीम ऑल्सो दैट योर मदर टंग इज़ योर पावर. Whenever you are enslaved, only your mother tongue can make you free from that prison. So always respect and keep the time to learn and have the command over your language. So this is your story. So I hope this story will entertain you and make it beneficial for your exam. And I hope you like this video. So please subscribe us and click on the bell icon for the latest updates.